Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that today we are going to start unit number 7. And the name of our unit is The Role of Government and Citizens. And today I will give you a complete introduction of this unit. So my dear students, now let's start the unit. On page number 55, the first page of this unit, the student learning outcomes are given. By the end of this unit, all the students will be able to understand and able to tell about these important points. So my dear students, in this unit, you will learn the relationship between a citizen and the government. It will give us a broader picture of a government system. It will help you to understand the ways a government fulfills the needs of its citizens. You will also learn about ways to act as a responsible and good citizen. So my dear students, हमने previous class में जो है आपके पढ़ा हुआ है कि what are the responsibilities of a good citizen, what are the responsibilities of government, what are the rights of the citizen. हमने ये तमाम चीज़ें जो है वो previous class में पढ़ी हैं. सो अब हम इसको बेटर तरीके से बता सकेंगे कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है और इसी तरीके से गवर्नमेंट कौन कौन सी नीड्स जो है वो सिटीजन्स की फुलफिल करती है. सो दिस विल बी डिस्कस्ड, द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन विल बी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. So my dear students, we will start from lecture number 1, and in lecture number 1 the students will be able to define community and its importance, describe the activities that individuals perform for the welfare of the community. So my dear students, first lecture में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है और एक कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. वी विल डिस्कस दैट. Then we will move forward towards lecture number 2. And lecture number 2, the students will be able to identify the key problems in their local area, like shortage of drinking water, lack of health and educational facilities, poor sewerage system, etc. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कम्युनिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो हम देखेंगे कि एक जनरली कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिटीजन्स को फेस करने पड़ते हैं. सो वी विल डिस्कस दैट इन लेक्चर नंबर 2. देन इन लेक्चर नंबर 3, the students will be able to recognize that citizens organize themselves to meet their needs. So my dear students, citizens क्या होते हैं, we will discuss that, और किस तरीके से citizens जो है वो different जो services हैं वो obtain करते हैं from the government, किस तरीके से वो अपने आप को organize करते हैं ताकि उनकी जो needs हैं उनको fulfill किया जाए. In lecture number 4, we will discuss about, the students will be able to describe what the government does to meet the needs of the citizens, suggest the ways the government and the people can work together to meet people's needs in the area. So my dear students, कैसे जो है वो गवर्नमेंट डिफरेंट हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, कैसे जो है उसको पता चलता है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो वहाँ पर कमी हो गई है, किस चीज़ की स्कार्सिटी है. सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट्स citizens. So this will be discussed in lecture number 4. So next is lecture number 5, and the students will be able to identify ways they can demonstrate good citizenship, playing fairly, helping others, following rules, taking responsibility for one's actions. So my dear students, जैसे कि हमने responsibilities हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट जो है हमारी डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करती है, इसी तरह सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टू बिकम अ गुड सिटीजन. वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, व्हाट वी नीड टू परफॉर्म, हाउ वी नीड टू डू परफॉर्म देम, वी विल डिस्कस दैट इन लेक्चर नंबर 5. Then we will move forward towards lecture number 6, and in lecture number 6 the students will be able to identify the personal traits of good citizens, like trustworthiness, respect for law, responsibility, honesty, tolerance, gender equality, and respect for others' rights. So my dear students, in this detail we will discuss about different जो आपके पर्सनल ट्रेट्स हैं टू बिकम अ गुड सिटीजन, कि कैसे आप अपने आप को गुड सिटीजन बना सकते हैं, कैसे आप कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर जो है वो शामिल करनी चाहिए तो ताकि आप एक गुड सिटीजन पर बन जाएं. वी विल डिस्कस दैट इन लेक्चर नंबर 6. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द लेक्चर नंबर 7 विल बी अ प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑन वाटर, कि पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हुई है, तो कैसे वी हैव टू फुलफिल दैट. दिस विल बी डन इन लेक्चर नंबर 7. Then we will move forward towards lecture number 8, and this will be the review of unit number 7.
So in this lecture, I will provide you with worksheets so that I can assess you, evaluate you कि आपने क्या सीखा इस unit से. You will learn a lot of things from this unit. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.